Final recorded 15,000 songs. All Raj Kapoor, Shankar Jayakishan. So we recited it. So being called, I was 92 years old. No? So I'm called a media there. Because he finds it a little difficult going India. So I said, I had called media there. I come stand here. Yeah, we want to take a BNT family shot. Vivek. Okay. Thank you. Thank you. That's totally a reunion. Complete and see all of us entered. You are wearing clothes. In -4, I was need to wear only a dhoti and this very metal. You know, this metal was freezing. And heavy headgear. Yeah, that's with the wig also. It's a new but it's going to release online. Saregama is releasing the video online on 15th, that's day after. But the audio is already out on. That's what he told me. Yeah, That he's already heard it. the audio is already out on iTunes, Amazon. It's out on Sound. अरे अखिल में कैसे यार प्रतिभा के साथ कम शी इज द स्टार ऑफ द डे यार हमारी फोटो नहीं क्या करेंगे थैंक यू Especially the Bentha family is here, and that's really making it special today. I have done modeling, I've done South Indian films, I've been a film journalist, I've been an actor, and today this is like a milestone in my life and in my career that I can debut as a singer. I may not do playback for somebody else, but in future if I get a chance to sing for myself, that would be wonderful. I'm really looking forward to that. Use that mic. Oh, sorry. Sorry, some mic errors and hookups. So, check. Audio, can you hear me? On नहीं है mic नहीं. अभी भी on नहीं है. Am I loud enough, guys, for the cameras? Check again. Check. Yeah, finally. So I just want to say a big thank you. All of you have come here, and this is a big encouragement for me. I hope you like that audio visual presentation that you saw. We literally shot that in 7 hours. We had no time, and we did it in a hurry because my director was leaving out of town the next day. So whatever we did was just a small, quick attempt at filming this video, and we tried to do our best. And the next time I do something, I hope to do it on a bigger scale than what it is right now. And thank you guys for coming. And yeah, we can start the media interaction. Introduce you to the director. He's not here. Amit Masurkar. He did this film recently, Suleimani Kira, which was like the talk of the town. Everybody has seen it, almost all of you guys. So when I wanted to do this video, first we were contemplating whether we should take a model, whether we should be doing it only with me. And Amit, being the very creative guy who always thinks out of the box, came out with this idea about the mystery man. As you see, it's all about me, but the best part is that I don't look like I'm all alone all throughout the video. So I hope you guys enjoyed the video.
Thank you. Why don't we ask you a Yeah, question? we'll Oh yeah, sure. You can do the question. So please tell us, since you said you've been an actor and you've also been a film journalist, Yeah. what has been the inspiration and the reason for you to take up singing? Okay. Singing is something that I was really passionate about since my childhood. It kind of came naturally to me, but I had not taken that much of a formal training that I should have been doing. A little bit of Hindustani classical in my 6th standard and a little bit of Urdu ghazals in my 9th. That's all the formal training that I had. But yes, of course, recently I started learning music from Anuradha ji, and I was fortunate to have a legendary singer train me. So since a couple of months we've been doing slight like practice music whenever we can. She is traveling practically every day all over the country doing her bhajan shows, and all over the world doing bhajan shows. So even if I get an hour with her maybe twice a week, I consider myself very fortunate. Any more questions? Is there an intention of doing an album or just a single release? No. Right now I begin with only a single. When I recorded this song, I had no clue where it's going to head. I didn't know I'm going to do a music video for it. I didn't know I'm going to have this press event. It was just an attempt where I was trying to gauge if I can do something like this, in the world of singing. So. Well, we are glad you did it, Pritika, because Oh. I'm speaking for the Bendha family. She used to sing to us on the set, and we always told. Yeah, what we can do is we can have separate media buys that we'll do after this, so that we give attention and everybody can speak. Okay, Anushka. Look at center, yeah. All of them. Ritika, you please in center. On the right, please. Yeah. Sorry. Everything? Just on your left, please. Center, please. Center, all of you. Okay, look here. Look at center. Thank you. अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो हम वो ही देते हैं आप लोगों को। नहीं अभी तक इफ्तारी में अटके हैं। हो गया, फोटो हो गया। चलो मौका है बेटा फैमिली को कैप्चर करना। घंटे पहले वो लगा फिर इसलिए बोल। हाँ फोटो नीचे इधर। What about here? बोलिए, सवाल करिए। कौन सवाल करेगा? विवेक का है। विवेक come here. विवेक कम यार। Come and stand aside. What are you hiding for? Make noise, please. Okay, 1 second. So Pritika, album finally got launched. Yes. What's your reaction? Oh, my reaction, I'm pretty thrilled right now because this is my first attempt at singing. I never thought I would record a song so soon, but मैंने सोचा अपने आप को एक मौका दिया जाए and मैंने कर दिया. अभी इनसे पूछे इनको पसंद आया कि नहीं? बहुत ही पसंद आया और स्पेशली सिंस हम लोग सालों से मीन्स एवर सिंस वी स्टार्टेड बेनते हाँ वी यूज्ड टू हियर हर सिंगिंग समटाइम्स अकेले में एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग हर सिंग फॉर अस ऑन द सेट जब भी हम लोग साथ में बैठते थे खाना वाना खाने के लिए एंड देन प्रीतिका वुड सिंग फॉर अस एंड हमेशा हम लोग कहते थे उसको कि यू शुड डू समथिंग अबाउट दिस and because she does have an absolutely beautiful voice. My only advice to her is I don't want her to sing only for herself. Play back, because you sound fantastic. So sing for other people too. I mean, she really sounds beautiful in it. She looks beautiful too. So, very, very happy for her and just wishing her every success in the world. Thank you. I have a little bit thing to share here. जब भी खाली समय मिलता था मैं और हमारे उस्मान अब्दुल्ला जी मामू जी वो और उनकी मामू की भांजी जो है हम थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस और सब कर ही लेते थे सेट पे एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी ट्रस्ट मी बिकॉज 1 year I was close to nothing of having time for myself or
रियाज या जो भी करना है बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता था. So thank you मामू for the session. You're welcome. The only thing I will add here is that बहुत कम ऐसा होता है कि जो लोग अच्छा गाते हैं वो अच्छे दिखते भी हैं. हाय Sorry. तो और दूसरी बात ये कि ये इनकरेजमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि ये जिस किस्म की कलाकार पर्दे पर हैं उसी किस्म की और उससे बेहतर गायिका बन सकें. जैसे कि अभी सुचित्रा ने कहा कि प्लेबैक सिंगिंग, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. लोग गाते हैं, हम सभी गाते हैं, आप सभी गाते होंगे, बाथरूम में गाते होंगे, सड़क पे गाते होंगे, कार में गाते होंगे, लेकिन अपनी आवाज़ को जनता तक ले जाना और फिर इस चैलेंज को फेस करना कि जनता उसे पसंद करेगी या नापसंद करेगी, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी शुड डू एंड वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट in this journey which begins today for her. आलिया की अपनी एक फैन फॉलोइंग है इस मौके पर. आज आप इन्हें किस तरह से मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा इन्हें, कैसे कर लेती हैं आप? No, but jokes apart, I think it's a very good video which she's made. Of course, her voice has been really fantastic. हम लोग हमेशा encourage करते थे प्रतिका को सेट पे कि, especially मैं तो करता ही था, remember कि you should probably give it a shot. बहुत अच्छी opportunity है and you can probably be a good singer also. So I'm glad she did it today. और I think we are lucky to get the first glimpse of it also. So yeah, all the best to her and may she get other good projects also in singing and acting both. Thank you so Vivek, much. why don't you Yes. Yes, here's wishing Pri warmest affections and lots of love. She's always had this beautiful voice, lilting melodies that we've heard on set, like everyone's shared. And I'm hoping that this will be taken to the next level, and this is the first step in that direction. So, all the very All best. the best. And yes. एक जो आपके फैंस ऑब्वियसली आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं, तो अभी कृतिका ने गाना गा दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके फैंस के लिए आप ये जो गाना कृतिका ने गाया, आप सब एक ग्रुप इसमें गाएं. क्या गाएं? साथ में गाएं, वही गाना. हाँ, यही गाना. Okay, if I know one, come on, we can sing it. Of course, we can sing it. हम कुछ sorry, that's a joke between Yeah. us. No, you start. Yeah, we'll Yeah, sing. yeah, we'll sing a few words. Just start. Sure, why not? What do you want me to sing? This same song. Oh man, okay. Oh man, I'm so nervous. कैसी है मेरी आवाज? आपको तो लगा था डब. Thank you guys, thank you. आपसे पूछना चाहूँगा प्रतिका कब से आपसे ट्रेनिंग ले रही है और आपने क्या उनमें टैलेंट पाया जो आपने इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया? देखिए, सबसे पहले तो शी हैज़ अ वेरी नाइस वॉइस, मीठी आवाज़ है और स्टेज के लिए एक एज अ परफॉर्मर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गुड परफॉर्मर भी होना चाहिए, खूबसूरत दिखना भी चाहिए और सुरीली है बेसिकली. तो आई थिंक शी हैज़ द राइट इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ गुड परफॉर्मर ऑन स्टेज ऑल्सो. कितने समय से ट्रेनिंग ले रही हैं और डेडिकेशन किस तरह का था? नहीं, शी इज़ वेरी डिसिप्लिन, वेरी डेडिकेटेड और बहुत फोकस्ड है और बहुत मेहनती है. रिसेंटली ही सीखना शुरू किया है उसने, बट आई थिंक मोर देन दैट इट्स हर डेडिकेशन और जितना डिवोटेडली करती है, आई थिंक that will help her a lot. लेकिन मैम पता आपको वो एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन सीरियल में काम कर चुकी है, तो एक करियर से दूसरे करियर में डाइवर्ट होना कितना ज़्यादा? नहीं, आजकल लकीली ऐसा है ना कि मल्टीटास्किंग हर एक को होना पड़ता है और टुडे इसमें कोई गैर बात नहीं है. जैसे 15 साल पहले होता था कि सिंगर हो तो सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही हैं. आजकल आप देखेंगे कि ये जितने प्रोग्राम्स वगैरह टेलीविज़न में आते हैं तो गाने भी गाते हैं, जजेस भी बनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी है, फिल्म में काम भी करते हैं, सीरियल्स में काम भी करते हैं. सो इट इज़ मतलब आजकल वैसा नहीं रहा है. यू जस्ट हैव टू बी इन द स्ट्रीम
और इस पर्टिकुलर एल्बम के बारे में कमेंट करना चाहेंगे क्या आप किस तरह हाँ, अच्छा लगा मुझे. इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट कि उन्होंने हेमंदा का गाना चूज़ किया और आदित्य ने उसका म्यूज़िक री अरेंज किया है. लेकिन इस गाने में मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी कि कवर वर्जन और रीमिक्स होने के बावजूद भी उस गाने की जो सैंक्टिटी है तो उसे उन्होंने कहीं पे ठेस नहीं लगने दी. उन्होंने उसकी सैंक्टिटी कायम रखी है. तो इसका जो मूड है उससे गाने का जो ओरिजिनल मूड है वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. थैंक्स मैम. एक आईडी